बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन बायोस्टैटिस्टिक्स और एपिडेमोलॉजी, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, hypothesis testing. It is also called hypothesis testing. In this class we see various type of tests used in biostatistics and epidemiology. In next class we will discuss the hands-on experience or the software. With the help of software we analyze the data and by performing an hypothesis testing. So statistical test, what is meant by statistical test? A statistical test provide a mechanism for making quantitative decision. फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह क्लेम कर रहे हैं कि जो पेशेंट्स है उनका ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वैल्यू यहाँ क्लेम कर दी कि इससे ग्रेटर है, तो अब आपका डिसीजन करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है. तो हाउ कैन यू टेस्ट द ब्लड प्रेशर वैल्यू? तो देयर आर सम स्टैटिस्टिकल टेस्ट. देखिए, हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे पास उसके करेक्ट के भी चांसेस होते हैं और उस डिसीजन के फॉल्स होने के भी चांसेस होते हैं. तो उसको हम कैसे चेक करें? तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट यूज इन statistics. So mechanism for making quantitative decision about a process to determine whether there is enough evidence to reject a hypothesis. Okay, तो हमें चेक करना होता है कि भाई हाइपोथेसिस के बारे में ज़्यादा एविडेंस है, रिजेक्ट करने की ज़्यादा एविडेंस है या एक्सेप्ट करने की ज़्यादा एविडेंस है. तो देयर आर टू टाइप ऑफ हाइपोथेसिस. वन इज कॉल्ड द नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस को हम H नोट से डिनोट करते हैं. दैट इज कॉल्ड द नल हाइपोथेसिस. इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस. और सेकंड टाइप जो हाइपोथेसिस की होती है उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. उसको HA भी कहते हैं और H1 भी कहते हैं. तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हाइपोथेसिस इक्वल के फॉर्म में है, ठीक है, अगर हमें कोई वैल्यू गिवन है तो तब हम उसको टेस्ट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर की वैल्यू आपको दी हुई है 180 फॉर एग्जांपल, इसी तरह 160. तो ये आपको कोई वैल्यू गिवन है. तो अगर वैल्यू आपको गिवन होती है तो दैट इज कॉल्ड दी नल हाइपोथेसिस इक्वल के फॉर्म में. फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि भाई ब्लड प्रेशर जो है 160 से ग्रेटर है, तो इसमें मैंने आपको कोई वैल्यू नहीं दी, मैंने आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी, बल्कि मैंने आपको रेंज ऑफ वैल्यू दी. यानी 161 भी हो सकता है, 162 भी हो सकता है और 163 भी हो सकता है. तो वैल्यू भी हो सकती है और उससे ग्रेटर भी हो सकता है. तो दैट इज कॉल्ड दी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कॉल्ड HA और H1. तो हम इसको डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें रेंज ऑफ वैल्यू है. दैट्स वाई हम इक्वल वाली चेक करते हैं हाइपोथेसिस यानी नल हाइपोथेसिस. उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं. अगर फॉर एग्जांपल ये एक्सेप्ट हो जाती है तो इट मीन्स ये जो हाइपोथेसिस है रिजेक्ट हो गई. और अगर ये रिजेक्ट हो जाती है इसका मतलब है ये जो हाइपोथेसिस है एक्सेप्ट हो गई है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. वन इज कॉल्ड दी नल हाइपोथेसिस व्हाइल द अदर इज कॉल्ड दी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. There are various type of test. Based on test there are two classes. One is called the parametric test and other is called the non-parametric test. In parametric test there is need of an assumptions. Okay, यानी आपको assumptions चाहिए होती है उसको चेक करने के लिए. While in non-parametric test there is no need of any assumption. Okay, so there are various type of parametric test and various type of non-parametric test. So we will discuss one by one. So parametric tests are based on the assumption.
अबाउट द नॉर्मेलिटी, उस पर हम एज्यूम करते हैं कि जो डेटा है वो नॉर्मल है. नॉर्मल का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू भी ज़्यादा नहीं है, मिनिमम वैल्यू भी ज़्यादा नहीं है, एवरेज वैल्यू ज़्यादा है. ओके, तो इट मीन्स द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द नॉर्मल. देयर आर वेरियस टेस्ट टू चेक either the population is normal, either your data is normal or non-normal. So we will discuss in next classes about the testing about the normality of the data. There are various graphs to ensure the normality of the data. There are certain tests. This test is called the test of association, means correlation. So one is called the correlation test. Test the association between two variables. There are various type of correlation. One is called the Pearson correlation and Spearman correlation. That is not Spearman correlation. Spearman correlation, and one is called the Pearson correlation. Pearson correlation is denoted by R, and population correlation is denoted by rho. Test the strength of the association between two continuous variables. In this Pearson correlation, we assume the data must be continuous. Data must be continuous. The other test is called the Spearman correlation test. The Spearman correlation is used to find the correlation between or the association between two ordinal variables. In this case, in Pearson correlation, we use the continuous variable like age, blood pressure, weight, price. All the variable must be continuous. While in Spearman correlation, we use the ordinal data, that is the rank data or like pain score data in medical sciences. Okay, and rating scale, movies rating scale, or any type of a rating scale we use, and does not need any assumption of normality. Okay, one of such type test is used name which is famous in medical sciences called chi-square test, which is used to find the strength of the association between two categorical variables, that is nominal variable, like like gender versus hypertension. These two are called the categorical variable. Or gender versus blood group. In medical sciences, gender versus blood group, these two are nominal scale variable. So how we measure the association between these two variables? So we use a chi-square test to measure the association. Other test is called the pair test. Pair test is very important in medical sciences to check the dose responses. Like the group of patient before treatment and group of patient after treatment. That is before treatment and after treatment. और इससे हमें पता चलता है कि either the drug is जो है वो इफेक्ट कर रहा है या नहीं. To check whether the drug is affected on before treatment or after treatment. So we use a peer test, peer T test. Independent T test, we use two independent groups. Two independent groups, the two are not related. Okay, means these two are independent. And we check whether the two groups are same or not, but these two groups are not dependent. So we use different types of group like group 1 male, group 2 female, two groups, and we check whether the average score are equal or not equal. So we use the independent t-test.
The another type of test is called the ANOVA. ANOVA is full form analysis of variance, which is given by the famous biologist and mathematician Fisher test. In this we use F test to check multiple groups. We check in ANOVA we use more than two samples. In case when more than two samples, we use the analysis of variance. Simple regression and multiple regression. These two are called the causal model. Okay, so y is equal to ax plus b, or y is equal to b plus ax. In one variable there is one variable, one independent variable and one dependent variable. These are called independent variable, and y variable is called the dependent variable. In simple regression we use the two variable approach. One is called the independent and other is called the dependent variable, and we find the relationship in the form of a straight line. In case when one independent variable, then we use a simple regression. In case when there are more than two variables, so we use multiple regression. Okay, multiple regression, the equation for multiple regression is ba1x1, the first independent variable, the second independent variable, and so on, the nth independent variable. So in case of a regression, we divide the data into two groups. One is called the independent group and another is called the dependent group. For example, sales and price are dependent. The blood pressure is dependent on sugar level. How much is dependent? But the two variables are continuous in case of simple regression, while in case of multiple regression, there are also the two variable must be continuous. In case when one variable is categorical, अगर एक वेरिएबल आपके पास categorical हो like gender, so in this case there are also we use the regression to predict the outcome. Okay, there are various type of non-parametric test. In case when there is violation of assumption, like your data is not normally distributed and the assumptions are violated. देखिए इससे पहले जो आपने पढ़ा पैरामेट्रिक टेस्ट, उसमें सबसे पहले आप सारे assumptions चेक करते हैं, उसके बाद आप टेस्ट लगाते हैं, तो which is very complicated. Sometime assumption violate हो जाते हैं, then we move toward the non-parametric test. In non-parametric test there is no need of any assumption. So there are various type of non-parametric test. One is called the Wilcoxon rank sum test, Wilcoxon sign rank test, and the sign test. Wilcoxon rank test difference between two independent variable, two sample and two are independently distributed, then we use Wilcoxon rank test. It means this is the alternative of independent sample t test. यानी ये independent sample t test का आपके पास कौन सा है, non parametric version. Similarly, test between two related sample, ये paired sample t test इससे पहले आपने related में देखा, जिसमें आपने before और after जो है वो dose response देखा. तो this is the paired sample t test when the assumptions are fulfilled. When assumptions are violated, then we use Wilcoxon sign rank test. What is meant by sign test? Two related variable. Okay, we use the sign test. Confidence interval. What is meant by, in all of these tests we are finding the confidence interval. So confidence interval is the value. For example, ये आपके पास mu है, mean. So mu is lie between some value, lower limit and upper limit. Like blood pressure, for example, blood pressure for a patient is lie between an interval
द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंसेज में जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं आप देखते हैं, तो आपके पास अगर वैल्यू अगर ज़्यादा आ जाती है तो आप कहते हैं इट इज़ अ डेंजर सिग्नेचर। मतलब है कि कोई भी रिपोर्ट अगर आप देखें तो उसमें आपके पास वैल्यू आ जाती है, लाइक वैल्यू आ गई 3.2, और आप उनको कहते हैं भाई आपकी वैल्यू जो है वो लाई करनी चाहिए 6 to 9 के दरमियान, तो आप उनको कहते हैं आप बहुत ज़्यादा मिनिमम है आपकी ये वैल्यू 3.2, तो आप उसको फिर ट्रीटमेंट बताते हैं ताकि वैल्यू इसके दरमियान आ जाए। व्हाट इज दिस कॉल्ड? व्हाट इज दिस रेंज इज कॉल्ड? दिस रेंज इन स्टैटिस्टिक्स और इन एपिडेमोलॉजी इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके, कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है जिसमें वो वैल्यू लाई करनी चाहिए, अगर वो वैल्यू उस रेंज से आउट हो जाती है देन योर हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। ओके, अब आपने देखना होता है कि ये सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी ये इम्पैक्ट करेगा या नहीं। तो वी यूज सम टेस्ट टू चेक वेदर द वैल्यू इज सिग्निफिकेंट और नॉट। So in statistics there are many types of confidence interval like 95% confidence interval, 99% confidence interval, okay, 90% confidence interval, 85%, 80%. These are some confidence limits. The best is the 95% confidence interval. This is the formula of confidence interval is equal to 1 minus alpha, and alpha is called the level of significance. Alpha is called the significance, statistical significance. Okay, based on this alpha, if our measured p value for the test is less than alpha, then we reject the hypothesis, and if our measured p value is greater than alpha, then we accept the hypothesis. Okay, there are various type of tests based on proportion, based on mean, based on difference between two means, and based on variance. Okay, and what is p value? P value is the statistical measure for a test. Based on p value we conclude about the hypothesis, either it is reject or either it is accept. Okay, if p value is greater than alpha, then we accept the hypothesis. Okay, in last, we measure the p value with the help of software like R. R is a statistical software, is a programming language, R Studio, and we use SPSS is the statistical packages for social sciences. It is a programming base like Python, R Studio, and SPSS. These two are the programming languages, while the SPSS is a software which is easily used to find the p value, mostly used in a medical and other social sciences. So in the next class we will discuss about the SPSS. Okay, अगर कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू लेक्चर तो आप वीडियो की कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में से इसका सॉल्व ये जो पीपीटी स्लाइड है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।